मेहरबानी से पूरे आपको भेजता हूँ अल्लाह के वास्ते। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, डिसिप्लिन से पूरे आपको मिलता देकर भेजते इंशाल्लाह। मैं तनिसंद्रा यूनाइटेड फर्म्स का प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। ये कोविड-19 जो बीमारी आई है, जो पूरी दुनिया में जो तहलका मचा चुकी है, इसके बारे में जो है सोचकर, इस बीमारी के बारे में सोचकर ये तनिसंद्रा वार्ड के जिम्मेदारान, हम पूरे तनिसंद्रा के बिजनेसमैन एक गरीबों तक राशन बांटने की फिक्र के बारे में तकरीबन 12,000 किट अब तक हमें आज के डेट को तकसीम करने वाले हैं। हम सोचकर सारे मोहल्ले को और मुस्लिम नॉन मुस्लिम पूरे जनों को लेकर हम इस किट को 12,000 किट को जो है आज के डेट में पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करें। हमें स्टार्ट करी मतलब लॉकडाउन से पहले? ये लॉकडाउन से स्टार्ट करें। हमें लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के 5-6 दिन के बाद जो है तकरीबन हमें एक मोहल्ले के जिम्मेदारों ने 10,000 किट आज तक बांट चुके हैं। हमें IPS स्कूल है, एक क्रिश्चियन स्कूल, ऐसे 4-5 इदारे मिलकर जो है ऑलरेडी बांट देने हमें। अब फिर भी जो है जिन तक नहीं पहुंचा, जो छोटे तबके के हैं, जो आग नहीं पूछते, उन तक पहुंचाने के बारे में जिक्र, फिर उनके बारे में सोचकर हमें सेकेंड राउंड जो है हमें 12,000 किट जो है आज के डेट को हमें पहुंचा रही है। हुकूमत की तरफ से जो है हमें इसमें क्या भी, हुकूमत की तरफ से क्या भी हमें क्या भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करें। ये हमारी ज़ाती मेहनत से जो है, ये हमारे जो यूनाइटेड फर्म के जो जिम्मेदारान हैं तकरीबन 70 मेंबर और जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, उन्होंने पूरे मिलकर ये तकरीबन ये जो फंड जो है जमा कर हमें तकसीम कर रहे हैं। मैं अबू मोहम्मद अंसारी, तनिसंद्रा वार्ड नंबर 6, और हम यहाँ पे एक नई कमेटी बनाए हैं। इसको कहते हैं तनिसंद्रा यूनाइटेड फर्म ये कमेटी है, और इस कमेटी की जानिब से हम सब के सब सारे मुसलमान और हिंदू भाई सब मिला के कोविड-19 की जो प्रॉब्लम चल रही है, इसके लिए जो है हम सब मिलकर इकट्ठा होकर बहुत सारा अनाज सब मिला के लोगों के बीच में, सारे हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को सब मिला के हम लोग यहाँ पे बंटवारा कर रहे हैं। ये सब अल्लाह खैर करे। बस अब तक यहाँ गली में अब कितने बांटे, मतलब जो अब तकरीबन यहाँ एक 10,000 किट तो बांट चुके हैं ऑलरेडी। अब तो तकरीबन एक 12,000 और अब रेडी हैं, 12,000 किट। अब हो सकता है अभी इसमें अभी बांटने जा रहे हैं। मई 3 तक चलेगा ये इंशाल्लाह। ये अनाज अगर इंसान खाया तो 15 दिन से महीने तक भी खा सकता है। मोहम्मद वदूद, मैं राचनडी का रहने का है, इब्राहिम मस्जिद का सदर में, और हमें जो राशन जो दे रहे हैं 20 मस्जिदा बैठ के ये तय करके ये 12,000 पैकेट ऑलरेडी हमें बांटे थे, फिर एक 12,000 पैकेट हमें बांट रही इंशाअल्लाह। अब ये कोरोना के जो बीमारी आई थी, जब से भी हमें पकड़ ले गई, हिंदू मुसलमान ये सिख ईसाई सब हमें मिल के सबको बांट रहे हैं। ना ये जात वो जात हम नहीं कर रहे हैं, सबको मिलकर भाया बहाना के जैसा हमें जो कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये कोरोना ये ख़त्म में तो लगा भी हमें हिम्मत है, हमें बांटने की ताकत रखी, हमें बांटती। ಮುಸ್ತಫಾ ಬೇಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನಿಸಂದ್ರಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫೋರಮನ್ನು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಜೊತೆಗೆ ರಂಜಾನ್ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸವೂ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಡವರಿಗೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ನಾಚಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅವ್ರ ಪರಿಪಾಠ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತನಿಸಂದ್ರಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರನ್ನು, ಅರ್ಹರನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾರು ಸಂಕೋಚದಿಂದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಈ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೋ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಮುಖಾಂತರ, ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಮಾಡುವ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀರಾ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಮಾಡದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ದಂಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮಿಯನ ಕೆಲವೊಂದು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು, ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತನಿಸಂದ್ರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫೋರಂ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ the cause that you are helping the others? See, this corona lockdown, this is the testing time for entire mankind. So far we have fared well. If you take it from Karnataka state as such, and even in Bangalore city in particular. As from Bangalore city police, we can pat on ourselves telling that so far the things are under control. But here we would like to definitely mention the remarkable contribution done by volunteers. For example, today we are in Hennur station limits, Sarai Palya, Tanisandra area. Tanisandra United Forum, their team, they have arranged for around distributing 5,000 ration kits. So far it is very heartening to hear that they have distributed around 10,000 kits. So they have taken care of 10,000 families. We have not seen a single incident in Bangalore city wherein some families suffering from hunger or some families suffering from lack of ration. The main reason is that insignificant contribution being done by number of volunteer teams across the city. So I would like to thank the entire team of Tanisandra United Forum. I urge them to continue to do their good work. We are always with them. ಯೂಶಲಿ ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. See, from East Division, if you look with respect to the population composition, population density, definitely it is a very challenging job, and especially Banaswadi subdivision, it is very ably handled by and led by ACP Ravi Prasad. And this area again, it is very sensitive, Hennur station limits, and it is again led very professionally by our inspector Srinivas and entire team. It may be starting from sub inspector, ASIs, head constable, constables, home guards, civil defense, and number of volunteers who have been assisting police. So whatever we are able to see a break or there is no massive spread of corona in Bangalore city, it is a collective effort. Let us continue and win this Your last message, sir? Nothing. See, what I suggest, so far we have done good, but it doesn't make us to be complacent. The battle is still not at war. So we should continue to ensure social distancing, exercise minimum precautions like wearing mask, using hand sanitizer, pocket sanitizers, wherever possible use visors, ensure minimum social distancing at any point of time.